Friends, in this class we are going to study inverse trigonometric functions, but this time we will first solve out certain problems, and depending upon the problem faced, we are going to derive and explain the formula related to that. Now, my first question today, evaluate the following. Sec tan inverse 2 sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3. How to work out it? It can be written as sec square sec inverse. This is, if we solve here, perpendicular upon base. This is perpendicular 1, base 1. It is root 5. This is the angle. So sec is equal to hypotenuse upon base. It comes out this one plus cosec square cosec inverse. This is cot base upon perpendicular. This is 3 3 is 9 10. Therefore it comes out to be under root 10. Now it can be written as sec inverse root 5 whole square plus cosec inverse root 10 whole square. It is root 5 square plus root 10 square. 5 plus 10, 15. Now, coming to next question. Now, some formulae. A sine inverse minus x is equal to minus sine inverse x. B cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. C tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x. D cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x. E sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x. F cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x. Their derivation can be done simply. For part A, we know let x is equal to
sine theta. Therefore, minus x is equal to minus sine theta is equal to sine minus theta, or sine inverse minus x is equal to minus theta and is equal to minus sine inverse x. Now coming to second formula, part B. फॉर्मूला डिराइव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, उसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला. फॉर सेकंड, लेट x is equal to cos theta, then minus x is equal to minus cos theta, or minus x is equal to minus cos थीटा को लिखा जा सकता है पाई माइनस थीटा. Therefore, cos inverse minus x is equal to minus theta, और cos inverse minus x, यहाँ से this line minus cos inverse is equal to pi minus theta. Here pi minus cos inverse x in place of theta. In the same way, the remaining of the formula can be derived. Now, question based upon question. Find the value of sin inverse minus 1 by 2. हम इसे वर्कआउट करेंगे. Then we will write it as sin minus inverse minus x is equal to minus sin inverse x minus pi by 6. Suppose in B part, cos inverse minus 1 by 2. We know that it is equal to pi minus cos inverse 1 by 2 equal to pi minus pi by 3 equal to 2 pi by 3. C, tan inverse minus 1 equal to minus tan inverse 1 equal to minus pi by 4. D, cot inverse minus 1 is equal to pi minus cot inverse 1 pi minus pi by 4 is equal to 3 pi by 4. यहाँ पर जो हमारे पास कॉट है ये एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, और डिफरेंट तरीके से बिहेव हम कहेंगे नहीं करता है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मैच नहीं करती है 10 के साथ, इसलिए ऐसा लगता है ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. इस वजह से इसको अलग से हमें ध्यान रखने की जरूरत है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. अगेन सम फॉर्मूले. Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. डेरिवेशन इसका यहीं पे अगर हम देख लें, let x is equal to sin inverse theta is equal to x is equal to sin theta is equal to cos pi by 2 minus theta. Therefore, theta is equal to sin inverse x and theta is equal to pi
pi by 2 minus theta is equal to cos inverse x. Therefore, sin inverse x plus cos inverse x is equal to theta plus pi by 2 minus theta, or sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. If I have a question, suppose it is sin inverse 3 by 5 plus cos inverse 3 by 5 is equal to what? In our solution, it is equal to pi by 2 from this formula. यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि x जो है mod x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. ये x की हर रेंज के लिए, हर वैल्यू के लिए सही फॉर्मूला है. नाउ पार्ट बी. sec inverse x plus cos sec inverse x is equal to pi by 2. सेम मेथड है. आप सपोज करें लेट x is equal to sec theta. It indicates that x is equal to cos sec pi by 2 minus theta, or theta is equal to sec inverse x and cos sec inverse x is equal to pi by 2 minus theta. इसको और इसको ऐड कर दें, then you will get sec inverse x plus cos sec inverse x is equal to pi by 2. सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जा सकता है. mod x must be here greater than equal to 1. इसको हमेशा डोमेन को ध्यान में रखेंगे. Now part C. tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. डेरिवेशन में हम देखें let x is equal to tan theta. ये इंडिकेट करता है that x is equal to cot pi by 2 minus theta. Therefore, theta is equal to tan inverse x and pi by 2 minus theta is equal to cot inverse x. इसको हम ऐड कर दें, then you will get tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 for all x belongs to R. रब कर दें इसे. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सम अदर फॉर्मूले. नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूले हम देखेंगे. यहाँ पे हमें अगर किसी फॉर्मूले को डिराइव करना आता है और उसके डोमेन और रेंज हमें क्लियर हैं, तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसी भी प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी नहीं होगी. अदरवाइज इन 12th क्लास इन डेरिवेटिव चैप्टर्स the question which are belonging or pertaining to this particular topic for to derive, sometimes we get the correct answer and sometimes we get the wrong answer because we are not going to consider any type of domain or range problem there. We are simply deriving that. Now the next formula is a cosec inverse x is equal to sin inverse 1 upon x for all mod x greater than equal to 1. B sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x for all mod x greater than equal to 1. C cot inverse x is
is equal to tan inverse 1 upon x when x is greater than 0 and when x is less than 0 what is going to happen, let us see. यहां साइन और कॉसेक इन दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 आता है। सेम वे में यहां पे भी कह सकते हैं। यहां पे जो tan का प्रिंसिपल वैल्यू आता है वो -π/2 से लेके +π/2 तक आता है, जबकि cot इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है वो 0 से लेके पाई तक आती है। देन व्हाट टू डू, हमें यहां पे देखना होगा कि जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, सही बात है, लेस देन 0 है तो ये निगेटिव वैल्यू देगा ना, निगेटिव वैल्यू, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू देगा। सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू को करने के लिए हम पाई में tan इनवर्स 1 अपॉन x इस एंगल को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये निगेटिव में देगा समथिंग निगेटिव और पाई ऐड कर रहे हैं तो जो एंगल आएगा 90 से अधिक आएगा, 180 से छोटा आएगा, मींस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दैट्स व्हाई ये कठिन नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना है। नाउ let us some question depending upon these question. Cosec inverse part A 1 by cosec inverse 2 is equal to sin inverse 1 by 2 is equal to pi by 6. B sec inverse -2 is equal to cos inverse -1 by 2 is equal to, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस cos इनवर्स 1 by 2 is equal to पाई माइनस पाई by 3 is equal to 2 pi by 3. Now C part, cot inverse 1 is equal to tan inverse 1 by 1 is equal to pi by 4. Now in D part, cot inverse -1, it will be, अगर इसका रेसिप्रोकल भी करें तो tan इनवर्स -1 ही आएगा। इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस यहां पे क्योंकि लेस देन 1 है -π/4 प्लस पाई इक्वल टू 3/π/4। ये हमें डिफिकल्टी देता है एट द टाइम जब हम रफली सब कुछ करते हैं और इसके डोमेन और रेंज को ध्यान नहीं देते। और जनरली आप देखेंगे जब आप किसी बुक को स्टडी करते हैं तो आप अवॉइड करते हैं डोमेन और रेंज को, वो आगे के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फार्मूला। नाउ नेक्स्ट फार्मूला, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Here x greater than 0, y greater than 0 and xy less than 0. Again it is pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy for all x comma y greater than 0 and xy also greater than 0. Pi by 2 x greater than 0, y greater than 0, xy is equal to 1. This is the formula.
Yeah, sorry, it is less than 1, greater than 1, equal to 1, because in denominator we are comparing xy with 1 only. Now, how this formula comes out, एग्जाम्पल लेने के बाद में देखेंगे इसे. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चंस simplify tan inverse suppose it is 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और हम इस फार्मूले को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, ये x है लेस देन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1/6 आएगा, दैट इज लेस देन 1. हम डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं. 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6. 1/2 इंटू 1/3. इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 5/6 upon 5/6 equal to tan inverse 1 equal to 5/4. My solution is correct. Remember one thing, that this angle is less than 45, this angle is less than 45. My answer must come less than by 90. 90 से छोटा आंसर आना चाहिए, आंसर में 90 से कम आना चाहिए. Now coming to second question. Suppose my second question is tan inverse 1/2 plus tan inverse 2. Simply अगर हम इसको वर्कआउट करें, then it comes out to be 1 minus 1. Tan inverse infinity is equal to pi by 2. इसको हम वर्कआउट कर सकते हैं. ये भी हम देखें, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री तक 90 डिग्री आ रहा है, यहां पे x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है. अभी भी 1 से बड़ा नहीं आ रहा है. देखें, जब 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है. Suppose next question, tan inverse √3 plus tan inverse √3. ये कितना होगा 60 डिग्री. ये कितना होगा 60 डिग्री. आंसर कितना आना चाहिए 120 डिग्री. देखिए फॉर्मूले को यूज करके आंसर मेरा क्या आता है. इक्वल टू tan इनवर्स √3 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा. तो tan इनवर्स 2√3 माइनस 2 इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स √3 इक्वल टू माइनस 60 डिग्री. This is wrong answer. Then what is the correct solution? Correct solution is, यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा है. मेरा जो सेकंड फॉर्मूला था जिसमें हम पाई ऐड कर रहे थे, पाई प्लस दिस मच, हियर इक्वल टू पाई यहां पे ऐड कर देते हैं, पाई यहां पे ऐड कर देते हैं, पाई यहां पे ऐड कर देते हैं. ये 180 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री. दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन. मींस हम ब्लाइंडली वर्कआउट नहीं कर सकते. ब्लाइंडली और वर्कआउट करेंगे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फॉर्मूला. इन सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन, बिकॉज इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट्स, देयरफॉर इन द नेक्स्ट वीडियो जो फॉर्मूले यहां पे ड्राइव नहीं करूंगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला.
इससे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हमने किया था। इस फॉर्मूले में हम करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजिकल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर देखें, द सेम गैप tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3। ऑब्वियसली ये एंगल अधिक होगा, 0 से 90 के बीच में ये होगा, 0 से 90 के बीच में ये भी होगा, ये एंगल इससे अधिक बड़ा होगा, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। tan इनवर्स 2 माइनस 3 1 प्लस 6 इसका जो tan इनवर्स माइनस 1 बाई 7 इजिकल टू माइनस tan इनवर्स 1 by 7. This is our answer. Now the next formula. Sin inverse x plus sin inverse y. Sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square for all x y greater than 0 and x square plus y square less than equal to 1. And in next part, when this condition not matched, pi minus sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square for all x y greater than 0 and x square plus y square greater than 1. These are the important conditions डोमेन की तरह वर्क करती हैं, जहां पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/9 प्लस 1/3 अंडर रूट 1 माइनस 1/4. It comes out to be sin inverse 1/2 into 2 root 2 by 3 plus 1/3 root 3 by 2. Is equal to sin inverse 2 से 2 कैंसिल जाएगा, root 2 by 3 plus root 3 by 6. Is equal to sin inverse 6 root 2 plus 3 root 3 अपॉन 18. यहाँ पे इस कंडीशन से x और y ग्रेटर देन 0 है और 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, इन दोनों का सम 1 से छोटा होगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस साइन इनवर्स 4/5। हमें पता है ये जो है 60 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, टोटल 113 डिग्री आता है। 60 डिग्री प्लस 53 मीन्स, या दूसरे तरीके से देखें, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। इसका स्क्वायर 3/4, इसका स्क्वायर 16/25। देख लेते हैं एक बार करके, 3/4 रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 16/25 इक्वल टू 75 प्लस 64 अपॉन 100, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1।
then we have to apply this particular formula. Is equal to sine inverse is equal to pi minus sine inverse x root 3 by 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई ये है ना, इसको हम सॉल्व करें 3/5 आ जाएगा, प्लस वाई 4/5, इसको अगर हम वर्कआउट करें जो कि रूट 3/2 है, ये 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 3 रूट 3/10 प्लस 2/5 इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 15 रूट 3 प्लस 20 6 रूट 3 रूट 3 प्लस 4/10। इसको डायरेक्टली हमने इस फॉर्मूले से अगर वर्कआउट कर दूं, मेरा गलत हो जाएगा, एंड आई विल बी सरप्राइज्ड व्हाई माय आंसर इज करेक्ट व्हेन रॉन्ग व्हेन आई एम यूजिंग द करेक्ट फॉर्मूला। Now the next formula, which is sin inverse x minus sin inverse y, it is equal to sin inverse x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. We have to remember only one condition, that x and y both are greater than 0. एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, इट विल बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स और वाई साइन में ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकते, मैक्सिमम 1 तक आ जा सकते हैं। साइन इनवर्स रूट 3/2 माइनस साइन इनवर्स 1, इट कम्स आउट टू दिस साइन इनवर्स a रूट 3/2 into 1 into 1 minus 1 under root 1 minus 3/4 equal to sine inverse 0 minus 1/2 sine inverse minus 1/2 equal to minus sine 1/2 equal to minus pi/6. Now coming to next formula. Cos inverse x plus cos inverse y equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square into 1 minus y square for all xy greater than 0. Obviously, it will be greater than 0, then also less than equal to 1. Second formula, cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse xy plus x under root 1 minus x square into 1 minus y square for all xy greater than 0. लेकिन सपोज करें अगर ये एंगल cos inverse y, this angle is larger than this one, then my answers must be negative. Here I have to write xy greater than 0 as well as x is greater than y minus cos inverse xy plus under root x 1 minus xy 1 minus y square. यहाँ पे अगर x छोटा होगा तो ये एंगल बड़ा होगा,
और अगर x बड़ा होगा तो एंगल छोटा होगा। तो अगर x छोटा होना चाहिए, smaller than y, then this angle will be larger. Here xy greater than 0 and x is greater than y. This condition we have to keep in our mind. Now my question, example questions. Example, cos inverse 1 by 2 minus cos inverse root 3 by 2 equal to cos inverse 1 by 2 into root 3 by 2 minus under root 1 minus 1 by 4 under root 1 minus 3 by 4 equal to cos inverse root 3 by 4 minus 3 by 4 into 1 by 2. Cos inverse root 3 by 4 minus root 3 by 4. One by 2 root 3 by 4. Root 3 by 4. Both comes out to be equal. No, this. Sorry, in cos formula, signs are opposite here. Cos inverse root 3 by 2 is equal to pi by 6. Now, next example. Cos inverse 1 minus cos inverse 1 by 2 minus cos inverse 0. It comes out to be cos inverse 1 by 2 into 0 plus under root 1 minus 1 by 4 into under root 1 minus 0 is equal to cos inverse 0 plus root 3 by 2. Cos inverse root 3 by 2. It comes out to be pi by 6 again. But वैसे सॉल्व करें तो ये कितना आता है 1 by 2 pi by 6 and ये क्या आ रहा है pi by 2. Pi by 3 minus pi by 2 is equal to minus pi by 6. Therefore, when x is greater than y, minus sign we have to put here. These things we have to remember always, otherwise there will be a problem. One more thing, if in the formula, just previous screen, in that I have used, when I have used here minus, here also I have used minus, that is wrong. You have to use here plus. Now, the next formula. Sine inverse 2x upon 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x. But this formula has certain conditions which must be matched. Otherwise, this comes out to be a wrong formula. For all mod x less than equal to 1. ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, इसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. अदरवाइज वी हैव टू यूज एज पाई माइनस 2
tan inverse x when x is greater than 1. And lastly, minus pi plus 2 tan inverse x for all when x is less than 1. These are the three formulas. The question which are based upon these formulae I will take in the next video. But today I want to complete every type of formulas, so that in next video either I have to derive these formulae or to explain question over it. Okay. Next formula, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x. Put the value x is equal to tan theta. In that case, the condition here is for all x is less than equal to 1. Less than equal to, and when x is equal to greater than equal to 0 and it is minus 2 tan inverse x for all x is less than 0. Now coming to third formula. Tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to 2 tan inverse x for all mod x less than 0 is equal to pi minus 2 pi minus 2 tan inverse x multiplied by minus for all x is greater than 0 and pi minus 2 pi plus 2 tan inverse x for all x is less than 0. Less than minus. Sorry, the limit I have written wrong. Minus 1 less than 1. These are the formulae which we have to remember. Now next formula about which is based upon sine 2 theta or sine 3 theta. These are the two formulas for sine 3x and cos 3x. Now sine 2x and cos 2x. These are the two formulas which are based upon sine 2x and cos 2x. Sine 2 theta and cos 2 theta. The derivation and how these domains are coming out here, that I will explain in the next video along with its question, some general questions, some specific questions, and with derivation of these problems. For today itself, now I am closing the video because it is just about 45 minutes. I do not want to make the video which is more than 45 minutes. Okay, thank you once again.